Hello. Hi, guys. Welcome back to my channel. Long time no see. Okay, so basically, I was I was not able to shoot um, because of a lot of reasons. I was traveling back and forth. There was a lot of events and stuff like that. But I'm back with my unboxing because that's what I do for now. And yeah, if you're new to my channel, I am Suma Susan Thomas. I am a data analyst, full time job, but when part time, I do like to create certain, YouTube videos around, unboxing the stuff that I'm getting and maybe cosmetic skincare, like a short video. I'm yet here to, understand my niche, but this is what I do. I order a lot of stuff. So I was like, I should at least show you guys that. Obviously, I do try all that. And if I like, I might make a video, but that's not something on me because I know that I can't. So I don't promise because I've understood that, even if something is good, I'm still not able to come and make a video around it. But soon I think that might change in my routine, or maybe that might change in my life, that maybe I might be making a video around it. So I'm not promising anything, but yeah, that's what I do. And if you're new or maybe old, and if you have been seeing me, I'm not that consistent, I'm not that consistent because I've understood two three things about me recently. That one, um uh, if I'm lost in my own world, I am lost. I can't make video. I don't, even if I'm feeling, I'm in my head, I want to, but I cannot execute it. Second, if I am in my work related pressure, or maybe I'm thinking around a lot around my work, I will realize that my day literally consumes in it. I was a person who used to balance and compartmentalize a lot, but recently I've realized that's something that, I've taken a backseat on. I'm no more a compartmentalized or a balanced person more. I am more over like, yeah, if I'm working, I'm not able to, switch on and off is not happening. So basically, so that's the second thing. That if I'm consumed in my work, if I'm in something, doing something, I'm literally consumed. So I'm not able to, make any videos. Third, आई थिंक ओनली व्हेन आई फील ओह बहुत हो गया असमत, ये दो चीज़ें तो चलती रहती है तेरी, यू आर लॉस्ट, यू आर कंज्यूम्ड इन योर वर्क, यू हैव योर पर्सनल लाइफ एंड व्हाटएवर, बट स्टिल फिर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आई एम लाइक ओ प्लीज, आई आई मीन लाइक मेरे पास बहुत सारे जब थोड़े सामान ऐसे आ जाते हैं, लाइक आई ऑर्डर अ लॉट इन क्लस्टर्स. सो बेसिकली व्हेन आई ऑर्डर इन क्लस्टर, आई फील कि अच्छा एक ही साथ सब आ गया है तो आई कैन ओपन इट और अनबॉक्स. मैं वैसे काफ़ी टाइम ऐसे भी ट्राई करती हूँ कि मैं चीज़ें रखूँ एंड देन एक साथ बताओ. जैसे मैंने कुछ पार्सल्स रखे हैं एक के बाद, बिकॉज एक साथ आया नहीं था, बट देन स्टिल इन अ वीक आई कलेक्टेड लाइक दैट. So this was high time I had to make this unboxing video. So here I am back again with you guys, showing what I got and unboxing stuff. मेरे घर पे जितना लाइट है मैंने उतना ही लाइट में वीडियो बनाया है. आई एम श्योर यू गाइस वुड बी लाइक, इसके वीडियो में लाइट क्यों नहीं है. इतना ही लाइट है. जो भी लाइट है, मतलब आई डोंट ऐड एक्स्ट्रा लाइट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो मेरे घर में ज़्यादा धूप भी नहीं आ रहा है. आई हैड स्टार्टेड अ सीरीज ऑन सनसेट बट आई एम नॉट एबल टू, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे घर पे जब तक धूप नहीं आएगा आई कैन नॉट शूट अनदर वीडियो. So, yeah, that's the update of my life. And let's go and dig into what I ordered and check out stuff and understand अगर तुम लोग को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. But these are the stuff that I ordered. Something from Amazon that we needed for our house. And also for a change, I do have clothes. So I'll be showing that as well. Okay. Okay. Let me park this here. Um, okay, I am very new with mics and everything. Oh, मेरा mic भी खो गया था तो मैं वैसे भी आवाज़ में बना नहीं पा रही थी वीडियो. बट या ऑब्वियसली आई सर्च्ड फॉर लाइक, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है घर. सो इसी वजह से बहुत चीज़ें इधर उधर भी है.
And recently, just an update about how I like my coffee now. I mean, I think morning I love cappuccino, but I cannot make one because right now I'm just experimenting if I can make. बट अगर मुझे मैकडी का कैपेचिनो मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बट या अदरवाइज ऑब्वियसली ब्लैक कॉफ़ी. बट ब्लैक कॉफ़ी पहले मैं इतना बड़ा मग होता था तो भी मैं भर के इतना पानी लेती थी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग लिटिल लेस. सो उसका फ्लेवर ज़्यादा होता है एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एंड लाइक दैट. I don't like to add more of coffee and make it strong. Rather than I would prefer less of coffee and less of water because मुझे dehydration नहीं चाहिए, तो वो भी एक reason है. I just got out of shower and I thought of shooting this because काफी हो गया था यार time. Let's dig into it because मुझे वीडियो भी बड़ा नहीं करना है. पता नहीं तुम लोग कितना देखते हो, पता चला मेरे स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो में ही तुम भाग जाते हो. So I don't want that. So let's open. I mean, इस बार इतना खास चीज़ें तो नहीं है, but these were like some stuff that we were thinking that हमें these are some capsules. वो तो छोड़ ही दो, ये मैं क्या ही बताऊँ capsules के ऊपर. What is this? Okay, I think this is, let me check what this is. This is again creatine supplement. So these are all supplements. छोड़ दो, supplement का मुझे कुछ बोलना नहीं है because मैं खुद इतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ. My husband knows better than me, so he's the one. Okay, so I think this is something I can share because this is something I wanted. I am in Bangalore, so basically Bangalore में hard water है and मेरे बाल. Recently I'm also obsessed with my hair because I want to make it because I have मेरे जब भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया था, लाइक कलर कर लिया, केराटिन कर लिया, बैक टू बैक ऐसे, तो बाल का टेक्सचर मेरा जो ओरिजिनली था, somehow I forgot what it was. So so wanted to come back to my original hair. So I what I did is मैंने पूरा hair cut भी कर लिया था, छोटा सा जितना भी वो treatment था वो सब निकाल के. Now this is my real hair, whatever it is, it's real. But ये इतना फूक जाता है, पता नहीं तुम लोगों को मैंने ये वीडियोस में बताया है कि नहीं. इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड स्टफ, आई हैव बीन टेलिंग दैट मेरे बाल इतने फूक जाते हैं एंड आई कांट, आई वाज नॉट एबल टू मैनेज इट. ओके, so what I've understood is I have become this obsessed person with my hair because I really want to set it up the way I like, and I also want to manage it. I don't want to go to salon every now and then to just to make sure that my hair is settled. I don't want to do that. So basically I'm changing a lot of routine around my hair and I'm experimenting a lot so that अभी भी तुम लोग देखते होंगे it's really after shower also ये बहुत set है. Otherwise मेरे को आफ्टर शावर भी मेरा बाल ऐसे अजीब सा हो जाता है, लाइक इट्स लाइक वेरी बैड. सो नाउ स्टिल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग like from 2 weeks I think, and I'm ordering a lot of hair stuff and I'm experimenting and I'm focusing on my hair a lot. So basically that is the reason I got this because यहाँ पे हार्ड वाटर होता है एंड हेयर फॉल भी हो रहा है. सो आई वांटेड कि हम इसको टैप में लगाए एंड मैं इससे हेयर वॉश करूँ. सो दिस इज नथिंग बट यू कैन सी 15 stage water softener filter for taps and shower. So हमारा शावर के साइज का कुछ मिल नहीं रहा था. सो आई वाज लाइक एटलीस्ट टैप वाटर में टैप वाटर का लगा लेते हैं क्योंकि नॉर्मली इफ इन केस टैप वाटर से भी तुम बाल धो सकते हो, राइट. सो या इसीलिए हमने सोचा कि विल फर्स्ट ऑप्ट फॉर दिस, लेट्स सी द चेंज. बहुत लोग यहाँ पे करते होंगे यार बिस्लरी या फिर आरओ व्हाटएवर, आई डोंट नो, दे माइट टेक इट फॉर हेयर वॉश एंड स्टफ एंड आई थिंक दैट्स बेटर ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे इतना बाल झड़ता है. So yeah, this is one of the change that I want. So this is a softener. ये हमें टैप को अटैच करना है and then there would be 15 filter stuff. Fits all standard taps. Temperature 5 to 70 degrees Celsius, but मैं गर्म पानी उतना भी नहीं ज़्यादा लेती. At life labor we combine. Okay, this is skin safe water to every Indian home. A multi-stage filter use KDF55. I'm not sure what that is, but फिल्टर का कुछ तो है. माइफिन स्टोन्स है इसमें एंड अदर 12 अदर एडवांस लेयर टू reduce chlorine, lime scale and heavy metals for healthier hair, skin and fixtures. So yeah, so this is one of the thing that I ordered because as I said I'm obsessed with my hair stuff and I really want to see the change.
बिकॉज एक टाइम हुआ करता था, ऑब्वियसली आई हैड लॉट ऑफ वॉल्यूम, ये सब मुझे रियलाइज नहीं होता था यार मुझे सब अभी पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन मे बी I've come to this stage where I've started realizing a lot of stuff which I never realized in my life. And it's really good because I can talk to you guys about it, and even I can tell you guys like मैं एक्चुअली इतना ध्यान नहीं देती थी और अब मैं दे रही हूँ, विच इज़ ऑल्सो रियली गुड. आफ्टर एज आई थिंक यू शुड ऑल्सो लुक इन टू योर सेल्फ अ लॉट मोर देन आसपास क्या हो रहा है. Okay, so um, that was it. In that, there is another Amazon. I so don't want to show this because this is again something that I am being experimenting with something else. So I don't want to show you what this is. Even it's not something that इतना कुछ खास नहीं है. Let's open these two. I'm sorry, मैं कुछ चीज़ें बता नहीं रही हूँ because कुछ चीज़ें वैसे भी बताकर कुछ मतलब नहीं है. It's something maybe I'm also not sure कैसा है क्या है. Even I'm experimenting. That's not gonna sustain or something. But if it's sustain, I have मैंने वो order भी वैसे कुछ इंस्टा रील देखकर एंड किसी के कहने पे have ordered. So I don't know if that works, but I really just wanted to. Okay, this is again yeah, I don't know if you have seen these things. So this is, let me see if I can read it, but I can't. It's all in Chinese. Okay, but I can show कि you can use this in your toilet. So basically I have to insert this and make sure कि मैं सब जगह उसको ये shape का बन जाएगा, the flower shape. Okay, and then flower shape, and whenever the flush would go it will clean. And वैसे भी यहाँ पे reused water use होता है flushes and everything, so I make sure that I keep such thing. And second, I also keep that वो क्या बोलते हैं उसको, अवॉइडेड दैट ऑल्सो, जो ऐसे I don't know what that is. Anyway, choice. अगर याद आए तो मैं वीडियो में डाल दूंगी. But yeah, I make sure that I put all this because any which ways hard water भी है और flush में reused recycled water आता है, and it's really good, like nicely recycled. But sometimes what happens is इनका पता नहीं ground level आ जाता है, what level आ जाता है कि इतना गंदा पानी भी कभी कभी फ्लश में आता है. Like ganda as in it's just brown water. Okay, so like muddy water kind of. And yeah, so these are the stuff that I got. I thought I got one more stuff, but abhi bhi kafi Amazon parcel aana baki hai, but I'll just show. This is another one that I ordered. um oh, why do I see nail paint लगा हुआ है इसको इधर और इधर भी. This is new piece, but yeah, it's fully I don't know why. ये किसी को दिया था. This is OPI. Oh God. Let me see if I can replace this because this is not how I want a new product. If you can see what happened. इसके ऊपर nail paint चिपका हुआ है. Okay. So basically this is OPI Infinite Shine Gel Like Top Coat. So what I'm trying to do is not to go for gel nail polish because UV रेस की वजह से बहुत स्किन कैंसर एंड ऑल ऐसे सब आ गया है उस पे भी बहुत कुछ. So I'm trying, not saying that I will not do, but I'm trying to do certain things at home. So if in case I love that thing, I might switch it to what I am doing at home. Obviously like कभी क्रिसमस आ जाएगा सब आ जाएगा तो I might go and do it, but I'm not sure. So yeah, so I follow one girl on Insta. Her name is I think Appu Ghar. I might just put it here if in case I feel. She makes the way she speaks about nail paint and the way she puts it out and the way she's so obsessed with doing her own nail paint. She looks like she has experimented a lot. और उसने काफ़ी ऐसे बताया है with her experience. She has showed how she does, like she does her nail paints like for 2 days, which is really good, I mean. And her nail paint looks like a gel nail polish done from a salon. So yeah, it was her recommendation.
So I had to go for this. I've also ordered a base coat. I've also ordered a top coat. And yeah, you can use regular nail paint. Okay, so the only difference she said is you have to apply a base coat. On top of it, you have to apply one your normal nail paints and stuff. She has a lot of ideas around nail paints. If you want to check out her reel on Instagram. It's Apu Ghar, or if I'm not saying it correctly, I'll just put it out there. So yeah, she recommended this, and obviously links मांग सकते हैं आजकल, right? So I did ask for link and I purchased these and the base coat. Base coat आया नहीं है. मुझे ये लिंक का मुझे भी सीखना है यार. मुझे पता नहीं कहाँ से मिल सकता है. आई एम ट्राइंग टू आउटसोर्स दैट स्टफ बिकॉज मैंने वो रीड किया. इट इज़ ईजी सिंपल बट द प्रॉब्लम इज I don't have much time to get into that stuff. So I want to really outsource. If you are watching this video and you know how to link stuff that is recommended and ऐसे सब recommendation के बाद how to link and provide links to the DMs, because it's just a wish link that I have to create. So if anyone can help me out, I'm ready to outsource it. Outsource. Okay, that's it from the Amazon side. I think I showed a very less videos. It was more of a, I think I gave you a lot of an update around what I am doing nowadays, or actually I am into. But yeah, now I understand why people can talk about what they are into, what they are. पहले मैं इतना ध्यान से इतने हर चीज़ों में अपनी चीज़ों में इतना घुसती नहीं थी. अभी मैं घुसती हूँ तो मुझे इतना बोलने का है, मतलब मेरे पास है चीज़ें बोलने का कि आई एम इनटू ऑल दिस, आई एम ट्राइंग टू डू दिस स्टफ लाइक दैट. Oh, this is a trendy clip if you guys all know. So, ये भी मेरी sister-in-law, she got it for me because she knew that I was looking for it. So she got it from Crawford Market, I think, in Mumbai. So yeah, I get like really cute stuff. If in case I mean, they are also into cute stuff. I am into also cute stuff. So they know that I keep on ordering online. So they kind of always tell me कि भाई तू जितना पैसे डाल के ले रही है बाहर से, ये प्रॉफिट में इतने का मिला, काइंड ऑफ. बट मैं क्या करूँ, मैं प्रॉफिट नहीं जा पा रही ना. लाइक आई एम इन बैंगलोर. आई डोंट हैव अ प्रॉफिट मार्केट, और मे बी what is the other market? I forgot. Bhuleshwar market. Okay, let's jump into another one. These Little Box. So I tried a new brand, Little Box. Again, मुझे रिसेंटली समझा, मैंने काफ़ी कपड़े शॉपिंग नहीं किए, मैं कपड़े खरीद नहीं रही थी. एंड आई वाज ओनली वेयरिंग माय हस्बैंड्स टी शर्ट टू ऑफिस, एंड आई डोंट नो, आई वाज इन परचेसिंग मच. तो before Mumbai trip we went and had some shopping. I bought a lot of stuff from West Side, and I didn't like it much anywhere else. मैंने काफ़ी सब जगह देखा. अभी मुझे ब्रांड से इशू होने लगा है कि सारे ब्रांड सेम ट्रेंड्स निकाल रहे. ऑब्वियसली कपड़े क्वालिटी अलग होता है, बट सेम ट्रेंड, सेम स्टाइल, सब everything same. And tops तो vanish हो चुके हैं. Like it has gone. Like there is no top criteria. There's no top. There's only, if in case you want a top full, you'll get a shirt, or maybe like plain tops. There's no top. It's all crop top. It's like all bralettes and stuff like that. और मेरे पास वही सब था, इसीलिए मैं परेशान हो गई थी कि मेरे पास नॉर्मल कपड़े नहीं है. ओके, सो आई वाज लाइक शिट, मेरे को शॉपिंग करना है. एंड दैट इज व्हेन या आई अंडरस्टूड कि टॉप्स क्राइटेरिया ख़त्म हो चुके हैं. मैंने सोचा यार, फिर मैं मुंबई जाती हूँ, बैंड्रा लिंकिंग में तो मिल जाएगा. देन आई वेंट टू बैंड्रा लिंकिंग, एंड अगेन आई वाज सो बोर्ड विद माय वन पीसेस. कितना वन पीस पहनेंगे यार. आई वांटेड टू वेयर जीन्स एंड टॉप एंड स्टफ लाइक दैट, बट नहीं. बट देन बैंड्रा गई. बैंड्रा में भी वही सीन. And Bandra is also giving a lot of dresses for 1200, 1250. I think they have also like reached up. पहले 600 का dresses they used to give. That was the max 600. Now it's like 1200. At the end मैं गई थी टॉप्स लेने, लेकिन मैं परचेज एक ही दुकान, पूरे इधर घूमने के बाद मैं हिल रोड से एक दुकान से मैंने आई थिंक 1 2 3 4 4 चार
आई मीन 3 वन पीस उठाए और एक उसमें वो भी टॉप उठाए, वो भी वुलन, हाँ ओके, टॉप्स भी वुलन ही मिल रहे। एंड आई गॉट वन पतला सा, वो भी ऑलमोस्ट क्रॉप है, हाँ ऑलमोस्ट क्रॉप टॉप, ओके। And I got like white shirt because I like to wear a white shirt on top of my one pieces, because मेरे body के proportion में मेरा हाथ नहीं है, so I like that. Otherwise anyways मैं sleeveless भी पहनती हूँ, but yeah some days I don't like to, so I wear that shirt. So I purchased one white shirt and I think I got something else as well. Yeah, पुराने ज़माने का styling आ गया है, हम लोग college days में डालते थे जो chunky wooden bangles. I got that. So if in case I'm able to make that video again, like I want to show you guys what I purchased from Bandra and what I got. I think I've just purchased from one shop because मैं सब जगह घूमने के बाद at the end I was like मुझे कहीं पे पसंद आ रहा था तो अच्छा लग रहा था, कहीं पे नहीं आ रहा था तो कुछ नहीं आ रहा, और वहाँ पे भी टॉप्स नहीं थे. Then I realized I have to search for places where I get tops. तो मैंने ऑनलाइन obviously Savana and all I know, मैंने ली क्लोथिंग में भी काम मिलता है, Savana में भी it's all trendy. So I was like मैंने इसमें भी कुछ टॉप्स नहीं खरीदे, बता दो इसमें भी मैंने कुछ तो वन पीस ही खरीदा होगा, बट I was so obsessed with shopping that I ended up buying whatever I got. Okay, so these three stuff, let's dig into it. I'm not sure if this video is gonna be big and I have to part it out, but if in case it's big, I'll part it out. I'll just make a separate I'll just part it into like little box video and one with Amazon and my updates.